Good afternoon. Welcome to Unacademy, India's largest digital platform where everyday educators are teaching live. Friends, कैसे हैं आप लोग? Can someone confirm whether I'm audible and visible so that we can start with the session? What is up, guys? So welcome to Unacademy. This is about me. ये Unacademy का टेलीग्राम चैनल आप इसको फॉलो करके रख सकते हो फॉर ऑल दी अपडेट्स लेक्चर शेड्यूल नोटिफिकेशंस ये अनअकैडमी के बेनिफिट्स है तो जिन भी बच्चों ने अभी तक ऐप डाउनलोड किया अनअकैडमी ऐप आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे वहाँ पर बहुत सारे फ्री क्लासेस आप देख सकते हो एंड टू वॉच दोस फ्री क्लासेस यू हैव टू यूज अ कोड अबीसी ABHICA ये सारे प्लान रेट्स हैं अनअकैडमी के तो अभी हमारा क्रैश का भी रेगुलर बैच खत्म हुआ है एंड क्रैश कोर्स हमारा ऑडिट का चलेगा 1 अप्रैल से दिस इज द चैनल ऑफ द अनअकैडमी ये सारे बेनिफिट्स है ये सारे प्लान रेट्स है एंड यू हैव टू यूज द कोड ABCA गाइस व्हेन यू यूज द कोड ABCA you'll get 10% ऑफ एंड थैंक तो अब 50 डेज नहीं रह गए बट अब 49 डेज रह गए 49 am I audible and visible? Hi Sanket, what's up? So आज की जो क्लास है आज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के हमने बहुत सारे जो हमारे रेगुलर बैच चल रहे थे उसमें नोट्स लिख लिए थे कुछ पेंडिंग है आज मैं आपको वो कंप्लीट कराना है संकेत क्या आप मुझे बता पाओगे द लास्ट हेडिंग इन द लास्ट पॉइंट जो हमने लिखा था वो कौन सा था उसके आगे हमें कंटिन्यू करना है लास्ट पॉइंट कौन सा था वो बता दीजिए हाय विनय गुड मॉर्निंग आगे सब लोग अपने वाले 15 पॉइंट लिख लिया था और कौन सा पॉइंट लिखा था वो बताओ कैजुअल वैकेंसी भी रूट 164 4 लिख लिया था अच्छा चेक करो 165 लिख लिया था क्या 165 नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप हाय सपना आई एम गुड थैंक यू आप कैसे हो 165 लिख लिया था अपन हाय गौतम हाउ आर यू एंड 162 लिख लिया था 162 162 चेक करो 162 लिख लिया था क्या ठीक है वो भी लिख लिया था ओके 161 हो गया आई थिंक हमने 160 भी लिख लिया था 160 can someone confirm for 160 160 alpha to 160 okay. And 151 is also done 151
right? 151 is also done. Perfect. अब हेडिंग दीजिए 153 टू 159, हेडिंग दीजिए 153 टू 159 दिन, बहुत कम ही बचा है। 153 to 159 heading दीजिए। जो बच्चे who are joining us today guys, please make notes, it will be very useful for you। 70 67 69 70 ठीक है। 60 कहाँ 64 हो गया, 64 हो गया, 60 61 ठीक है। I just wrote it down। मेरा 149 1 4 6 पेंडिंग, 115 पेंडिंग, 152 पेंडिंग, 152 6 पेंडिंग, 153 से 159 पेंडिंग एंड 163 163 ये पेंडिंग ठीक है। चलो सो नाउ हेडिंग दे दीजिए 153 से 159 डेली। फर्स्ट पॉइंट, एनी इंडिविजुअल, देखो पहला पॉइंट, एन इंडिविजुअल who is intended to be appointed as director, all those people who are joined us for the first time guys, I'll be making notes of this particular section, it will be very useful for you guys, please make notes। It is in continuation with the regular batch which is going on Unacademy app, comprehensive batch for May 22 and onwards again। पहला point, any individual who's intending to be appointed as a director, who's intended to be appointed as a director, ठीक है, ऐसा एरो मार्किंग, shall make application DIR 3 along with rupees 500 to CG, ब्रैकेट में MCA रीजनल डायरेक्टर। फिर बराबर ऐसा किया होगा आपने, उसके नीचे लिखिए CG अलॉट दिन within 1 of receipt of application, within 1 month of receipt of application। ये फिर इसको मैं A कर देता हूँ। B, individual will go to company within 1 month of receipt of date, within 1 month of receipt of date। कंपनी ये हो जाएगा C, कंपनी विल गो टू ROC, फॉर्म नंबर DIR 3C, 3C within 15 days, within 15 days from date of receipt of intimation from individual। ठीक है, now circle the word DIR 3, circle the word DIR 3C। हो गया। Are you done guys?
within 15 days from the date of receipt of intimation from individual. Now, नीचे लिखिए next. What are the documents to be attached? देखो what are the documents उसी में डील वाले में ठीक है what are the नहीं, ऐसे documents to be attached along with DIR3 heading दे दीजिए documents to be attached along with DIR3 उसमें लिखिए 5 होंगे 4 5 5 arrows. First photo. First one is your photo. Number two is IG proof. After photo there is ID proof. Guys, after photo there is ID proof. Third, address proof. Photo, ID proof, address proof. Fifth, board resolution proposing his appointment. Board resolution proposing his appointment as a director in existing company. Hi Sujata. Board resolution proposing his appointment as director in existing company. And the last one, specimen signature duly verified. Specimen signature duly verified. Leave one line and next point. And I hope guys you guys are writing in the directors का part only where you have left the page. ठीक है? डिस्कवरी मत करना अलग से बनाने की. People who are following me since in start, आपके लिए मैंने पेजेस छुड़वाए थे वहीं लिखना है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स. भगवान के नाम पे वहीं लिख देना प्लीज. लिखो. Leave one line then write the next point. DI3 shall be signed by. DI3 shall be signed by two arrows applicant using his her DSC and verified by CS in full-time employment, MD or director or CEO or CFO of the company where he is to be appointed as director. Verified by CS in full-time employment or MD or director or CFO or CEO of the company where he is intended to be appointed as director. Done. Next. Next point लिखो. If there are any defects, in the application, next point, if there are any defects in the application, then the applicant has to resubmit. Then the applicant has to resubmit. Then the applicant has to resubmit the application within 15 days. Within 15 days of such intimation.
within 15 days of such intimation by CG. Within 15 days of such intimation by CG. Within 15 days of such intimation by CG. Circle the word 15 days. Full stop. उसी के नीचे लिखो. In case the application is rejected. In case the application is rejected, the fee paid, the fee paid will neither be refunded, the fee paid will neither be refunded nor adjusted, neither will be refunded nor adjusted with any other application, with any other application. Next point. Next point. The din so allotted, the din so allotted the din so allotted will be valid for lifetime. The din so allotted will be valid for lifetime of the applicant, will be valid for the lifetime of the applicant, and will not be allotted, and will not be allotted to any person, will not be allotted to any person. Next point. Next point. If the company fails to furnish, if the company fails to furnish DIN, if the company fails to furnish DIN to ROC, then company and officer, company and officer shall be liable for minimum 25,000, maximum 1 lakh and 100 rupees per day till default continues. Minimum 25,000, maximum 1 lakh and 100 rupees per day till default continues. Till default continues. Till default continues. Next. Next point. देखो. If individual, if individual or director of company contravenes, if individual or director of company contravenes 152, 155, 156, he shall be liable up to 50,000 plus 500 rupees per day, 500 rupees per day till default continues. Till default continues. So all those people who have joined me on YouTube, guys, please make notes. हम appointment of directors के notes बना रहे हैं. आपके notes बन जाएंगे, useful रहेगा आपको. Next. Next उसी में लिखो. एक लाइन छोड़ दो. Cancellation slash Surinder slash deactivation of DIN. देखो. The CG. Cancellation slash Surinder slash deactivation of DIN. लिखो. The CG or the regional director, the CG or regional director or any officer authorized by regional director or any officer authorized by regional director
may cancel or deactivate the DIN, may cancel or deactivate the DIN, may cancel or deactivate the DIN in case लिखो अभी नीचे ए या कैंडल चला कैंडल चला लो ए लिख दीजिए ए DIN is found to be duplicated लिखो DIN is found to be duplicated DIN is found to be duplicated B it is obtained in a wrongful or fraudulent manner it is obtained in wrongful or fraudulent manner wrongful or fraudulent manner C death of the individual D the concerned individual has been declared as unsound mind the concerned individual has been declared as unsound mind E if the individual has been adjudicated if the individual has been adjudicated as insolvent if the individual has been adjudicated as insolvent F F लिखिए on an application made in DR5 on an application made in DR5 by the DIN holder to surrender the DIN to surrender the DIN along with the declaration along with the declaration stating that stating that he has never been appointed he has never been appointed as a director he has never been appointed as a director in any company and and the said DIN and the said DIN has never been used and the said DIN has never been used for filing any document and the said DIN has never been used for filing any document, the CG may deactivate the DIN. The CG may deactivate the DIN. Next, फिर नीचे लिख दीजिए before cancellation an opportunity of being heard will be given. Before cancellation an opportunity of being heard will be given. Before cancellation an opportunity of being heard will be given. Now one more heading मतलब उसी में चल रहा है ठीक है Procedure for intimation of changes देखो procedure for intimation of changes in DIN procedure for intimation of changes for intimation of DIN C is death of the individual C point was death of individual देखो procedure for intimation of changes in DIN application first point उसी के नीचे ठीक है ना उस heading के नीचे first point every individual who has been allotted a DIN and who requires any changes
who requires any changes as stated as stated in dir 3 as stated in dir 3 shall intimate such changes to cg within 30 days in form number dir 6 circle the word dir 6 circle the word 30 days. Then number 2, the applicant shall download dir 6 देखो the applicant shall download dir 6, fill in the relevant changes and attach scanned copy and attach scanned copy of proof of change particulars and shall submit electronically. Next point, dir 6 dir 6 has to be digitally verified. dir 6 has to be digitally verified by practicing ca/cs/cma. Has to be digitally verified by practicing ca/cs/cma. /ca/cs/cscm. Next, नीचे लिखो भी the CG upon being satisfied the CG upon being satisfied shall intimate the changes to the applicant. The CG upon being satisfied shall intimate the changes to the applicant. फिर next point, the DIN cell of MCA, ये रहा सामने स्क्रीन पे देखो, the DIN cell of MCA shall also intimate the changes. The DIN cell of MCA shall also intimate the changes to the concerned ROC. The DIN cell of MCA shall intimate the changes to the concerned ROC under whose jurisdiction under whose jurisdiction under whose jurisdiction the registered office of the company is situated. The registered office of the company is situated. Last point, the concerned individual shall also intimate the changes. The concerned individual shall also intimate the changes to the companies in which he is a director, within 15 days of such change. Within 15 days of such change. Within 15 days of such change. Circle the word 15 days.
अब हेडिंग दीजिए 152। लिखो, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। सेक्शन 152, तो दिस बिकम्स आई थिंक 18th point, हेडिंग 18th। पहला देखो, if name is stated in the articles, if name is stated in the articles, then the individuals, then the individuals who are named, then the individuals who are named shall be first directors, shall be first directors। फिर उसके नीचे डोंट चेंज द पॉइंट, उसके नीचे if name is not specified, if name is not specified but but manner of appointment, manner of appointment is specified, but manner of appointment is specified, the individuals then the individuals who appointed, then the individuals who are appointed, then the individuals who are appointed in the manner, in the said manner लिख दीजिए, in the said manner shall be first directors, shall be first directors। फिर उसी के नीचे डोंट चेंज द पॉइंट, ऐसा लिखो, if name चोकड़ी manner चोकड़ी, मतलब name is also not specified, manner is also not specified। देखो, if name चोकड़ी manner चोकड़ी, then comma, then comma नीचे वाली लाइन पे, ठीक है, नीचे the subscribers to the memorandum, देखो, the subscribers to the memorandum who are individuals, subscribers to the memorandum who are individuals shall be deemed, shall be deemed to be first directors, shall be deemed to be first directors of the company until, until the directors are duly appointed, until the directors are duly appointed। अब नेक्स्ट पॉइंट बनाइए नंबर 2, in case of OPC, in case of OPC the sole member, the sole member shall be deemed, the sole member shall be deemed to be first directors, shall be deemed to be first director। नेक्स्ट पॉइंट, देखो, एज पर सेक्शन 152, एज पर सेक्शन 152 ब्रैकेट में 5, मतलब सब सेक्शन 5, एज पर सेक्शन 152 5, कंपनी शैल फाइल, company shall file consent of director
consent of director with ROC, with ROC within 30 days of such appointment, within 30 days of such appointment, inform inform DIR 12, inform DIR 12 along with prescribed fees, along with prescribed fees, along with prescribed fees. नीचे लिखो अभी next point. In case of appointment of ID, in case of appointment of ID, in case of appointment of ID, an explanatory statement, ये extra point है जबकि यहाँ पर कोई relevance नहीं है इसका, फिर भी दिया हुआ लिख लेंगे अपने को. In case of appointment of ID, an explanatory statement, an explanatory statement annexed to the notice of general meeting, annexed to the notice of general meeting, annexed to the notice of general meeting, shall include a statement, shall include a statement in the opinion of board, shall include a statement in the opinion of board that he fulfills, that he fulfills that he fulfills all the conditions, all the conditions related to appointment, all the conditions related to appointment specified in this act, specified in this act, specified in this act. Next point, 152 subsection 5 is not applicable, is not applicable to, ऐसे लिखो, गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 8 कंपनी, फिर ऐसे लिखो बेनिफिट इफ 92 137 कंप्लाइड. ये पता होगा ना आपको 92 और 137 वाला, ये हर जगह लिखा हुआ है. एनुअल रिटर्न एंड वो एफएस, आरओसी की मस्ती नहीं की है, आरओसी की मस्ती नहीं की है, वो वाला पॉइंट है. Benefit of exemption will be given only if 92 and 137 is compliant. Done. नेक्स्ट हेडिंग, कौन सा नंबर बनेगा अभी हेडिंग का, कौन सा नंबर बनेगा बच्चों? हेडिंग, हेडिंग का नंबर 18. लिखो ये हेडिंग, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन 152(6), 152(7), रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन 152(6), 152(7. चलो जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा लिखो, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ब्रेकअप, रोटेशनल, नॉन रोटेशनल, मिनिमम 2/3, मैक्सिमम 1/3. फिर ये रोटेशनल को लिख दीजिए ब्रैकेट में,
रो, नो रो। फिर रोटेशन का ब्रेकअप कीजिए। रिटायरिंग, नॉन रिटायरिंग। नियरेस्ट टू बैलेंस, नियरेस्ट टू वन थर्ड बैलेंस। राउंड ऑफ टू नियरेस्ट, राउंड ऑफ टू वन आएगा, राउंड ऑफ टू वन। फिर ये जो रिटायरिंग है इसके यहाँ सर्कल मारो, एस्ट्रिक बनाया मैंने। यूज 0.5 बचपन वाला रूल। देखो, यूज 0.5 बचपन वाला रूल, खाली जब रिटायरिंग निकालो थे ना तो इसके यहाँ पे लिख दीजिए री, नो री, री, नो री, री, नो री। डन है। उसके नीचे लिखिए टोटल will include all directors except I can। कॉपी करो, जैसे मैं लिख रहा हूँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय सीजी, अल्टरनेट डायरेक्टर, एन से नॉमिनी ऑफ प्योर पीएफ। मतलब जो पीएफआई बने एक्ट के थ्रू, नोटिफाइड पीएफआई नहीं, प्योर पीएफ। जैसे एलआईसी हो गया, आईडीएफसी हो गया, यूटीआई, ये तीन याद रखना, एलआईसी, आईडीएफसी, यूटीआई। एलआईसी, आईडीएफसी, यूटीआई, इसको याद થઈ ગયું। लिखो वहां पर, लिखो यहाँ पर, इफ, नहीं सॉरी, लिखो हेडिंग दो, फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी, filling up of vacancy before, if on same dates, either mutually or by lots, if on same dates mutually or by lots, चिट्ठी। जो पहले आया पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर सेम डेट्स पर आया है तो सर म्यूचुअली और बाय लॉट्स, म्यूचुअली और बाय। देन नीचे लिखिए, if if the directors who are retiring by rotation, if the directors who are retiring by rotation, अच्छा if को कट कर दो ना, if को कर दो, तो लाइन भी, the directors retiring by rotation are eligible to be
reappointed, or company can appoint new director in his place, are eligible to be reappointed, or company can appoint new director in his place, or company can appoint new director in his place, or company can appoint new director in his place. तो नीचे लिखो उसके, अब उसी के नीचे if new director is to be appointed, if new director is to be appointed and the vacancy is not yet filled, and the vacancy is not yet filled, if new director is to be appointed and the vacancy is not yet filled, then 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 meeting will be adjourned. Then the meeting would be adjourned by 1 week, by 1 week to the same day, same time. The meeting would be adjourned to the same day, same time, by 1 week to the same day, same time, and same place. By 1 week to the same time, same day, same place, which is not a national holiday. Which is not a national holiday. Full stop. अब उसके नीचे, if it is a national holiday, if it is a national holiday, then then meeting shall be adjourned, then the meeting shall be adjourned till the next succeeding day, till the next succeeding day, which is not a national holiday, which is not a national holiday, at the same time and same place, at the same time and at the same place. ठीक है, फिर उसके नीचे लिखो, उस वही पॉइंट चल रहा है अभी भी. If at the adjourned meeting, if at the adjourned meeting, if at the adjourned meeting vacancy is not yet filled, vacancy is not yet filled, if at the adjourned meeting the vacancy is not yet filled, comma, the retiring director, क्या बोलोगे आप? The retiring director shall be deemed to be, the retiring director shall be deemed to be reappointed, shall be reappointed with immediate effect, with immediate effect. Oh, thank you, Manali. Manali, Manali. Full stop. अब उसी के नीचे reappointment will be effective. Reappointment will be effective from the date of. Reappointment will be effective from the date of adjourned, adjourned meeting. Reappointment will be effective from the date of adjourned meeting. Reappointment will be effective from the date of adjournment meeting.
नीचे लिखो एक लाइन छोड़ के, सॉरी, ऑटो नहीं, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट is not possible in following cases. In following cases. कॉपी करो, उसका कोड था हमारा रूड पापा। कॉपी दिस। RUDE potent, रूड पापा, पापा पापा पापा, रूड पापा। मतलब मैं नहीं बोला सर, मैं नहीं बोला। थैंक यू। रेजोल्यूशन इज पुट एंड लॉस्ट। उसके नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, 152.6 इज एप्लीकेबल, 152 ब्रैकेट में 6 एंड 7 ब्रैकेट में 7, 152 ब्रैकेट में 6 एंड 7 is applicable only to a public company, only to a public company. That is, it is not applicable. That is, it is not applicable to a private company. That is, it is not applicable to a private company. That is, it is not applicable to a private company. वापस से that is, वापस ना that is, all the directors in private company are non-rotational directors. Are non-rotational directors. Are non-rotational directors. फिर लिखो एक और पॉइंट, 152 6 and 7 is not applicable to a unlisted government company, unlisted government company, unlisted government company and its subsidiary, उसी की subsidiary। फिर उसके नीचे लिख दो बेनिफिट टिकड़ी डॉट 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 92 137 टिकड़ी, तो ध्यान रहेगा बेनिफिट टिकड़ी डॉट 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 92 137 टिकड़ी डॉट डॉट डॉट। अरे वही आरुषि की मस्ती, मस्ती मस्ती आरुषि की मस्ती। थैंक यू। तुम्हारा ये भी हो गया। नाउ हेडिंग दीजिए 150।
150. लिखो, मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक ऑफ आईडी, हेडिंग दीजिए, मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक ऑफ आईडी, मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक ऑफ आईडी। उसके बाद लिख दीजिए, रीड पेज 1.43 टू 1.45 या 19th, पेज 1.43 टू 1.45 मॉड्यूल, मॉड्यूल। फिर उसके नीचे, उसी के नीचे मान लीजिए, एग्जाम्शन फ्रॉम ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, ऐसा लिखिए, एग्जाम्शन फ्रॉम ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, पेज 1.44, इंपॉर्टेंट। तो अपन ने मैपिंग कर दी, पेज 1.44 इंपॉर्टेंट। क्लियर? 19th ओवर, तो हम लिख रहे 141 एंड लिखो अभी 149 1, 149 1, हेडिंग दीजिए, मिनिमम स्लैश मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम स्लैश मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ए, तो पहला पढ़ना चाहिए, पहला, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। देखो, ओबीसी 1, प्राइवेट 2, पब्लिक 3, ठीक है, दिस इज मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। यहाँ लिखता हूँ मैं मैक्सिमम 50, maximum 15, if more than 15 directors pass SR to increase the limit, आधे लोग को लगता है अपॉइंटमेंट के लिए, नहीं नहीं, टू इंक्रीज द लिमिट, टू इंक्रीज द लिमिट। फिर इसी के नीचे, SR is not applicable to government company slash section 8 company provided 92 137 dot dot dot, लिखा। अब वहां पर एग्जाम्पल लिखिए, if our states max 12 director, company has 11 directors, they want to appoint more 6 directors, more 6 directors, answer,
पहला, pass SR to alter AUA. Number two, pass another SR to increase the limit. Correct? Third, appoint directors by copy this. आई होप आपको समझ आ रहा होगा, याद आ रहा होगा, हमने किया हुआ है सब चीजें, पहले अपन लिख रहे हो उसको। डन है? डन। नेक्स्ट लिखिए साहब, नेक्स्ट पॉइंट बना लीजिए नंबर टू, वुमेन डायरेक्टर एप्लीकेबल लिस्टेड पब्लिक पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 100 crores, मोर देन और इक्वल टू 300। इसके नीचे लिखो अभी, एटलीस्ट एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर, एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर, एटलीस्ट वन को अंडरलाइन कर दीजिए, एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर shall be on the board, shall be on the board, shall be on the board of above companies, above companies। फिर लिखो कैजुअल वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months of vacancy whichever is later, whichever is later, next board meeting or 3 months of vacancy whichever is later। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट मान लिखो रेसिडेंट डायरेक्टर, एज इट इज कॉपी कर दीजिए रेसिडेंट डायरेक्टर और इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, कॉपी रेसिडेंट डायरेक्टर एज इट इज कॉपी। डन। हो गया। देन
अब आराम आराम से ना बहुत सारी चीजें लिखनी है आपको। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देखो अभी 149.4। अब एक नया पॉइंट बना दीजिए 20। ये कौन सा बनाया अपन? कौन सा पॉइंट बनेगा अभी आपका? 21। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 21, राइट, 21 बनाइए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चलो, नाउ इंडिपेंडेंट। उसमें पहला एप्लीकेबिलिटी, कॉपी कर दे जाओ। लिस्टेड, पब्लिक। पब्लिक में तीन होता है: पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, लोन्स, बोरोइंग्स, डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स। सब लिस्टेड के नीचे एटलीस्ट वन थर्ड शुड बी आईडी। वन थर्ड शुड बी आईडी। यहाँ पर पेड अप शेयर कैपिटल में मोर देन और इक्वल टू 10 करोड़, और टर्नओवर में मोर देन और इक्वल टू 100 करोड़, और एक्सीडिंग 50 करोड़। एक्सीडिंग 50 करोड़। और इसको मैं बॉक्स में डालूंगा। All this data has to be checked on 31st March। ठीक है, फिर एटलीस्ट टू शुड बी आईडी। इस केस में एटलीस्ट टू शुड बी आईडी। फिर नंबर टू, द अबाव कंपनीज एक्ट रूल्स और सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी विच एवर इज हाई। अगर ऑडिट कमेटी में आपके पास ज्यादा लोग हैं पर वहां पर क्या बोलते हैं, मेजोरिटी शुड बी आईडी, उस केस में या इस केस में दो, विच एवर इज हायर, आप उस हिसाब से आईडी को अपॉइंट करो। फिर हैशटैग पब्लिक के वहां मारो, वहां लिखो नीचे उतार के, फॉलोइंग अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट आईडी। तुमको पता है, होली ओन सब्सिडरी, डोरमेंट कंपनी, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी, डोरमेंट कंपनी, जॉइंट वेंचर। फिर फोर्थ, कैजुअल वैकेंसी ऑफ आईडी, सेम पॉइंट। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months of vacancy, whichever is next board meeting or 3 months, whichever is later, whichever is next board meeting or 3 months, whichever is later. Next point, fifth, देखो, a company shall not be required to appoint ID. A company shall not be required to appoint ID if it ceases, if it ceases, if it ceases to fulfill any of the three conditions. If it ceases to fulfill any of the three conditions related to paid up share capital,
related to paid up share capital or turnover, related to paid up share capital or turnover or loans for 3 consecutive years. For 3 consecutive years. For 3 consecutive years. Next point. Next point. Every ID, every ID shall give a declaration that he meets the conditions, that he meets the conditions of section 149(6) of section 149(6) at first board meeting in which he acts as director. Fail. First board meeting in every financial year, or whenever there is any change which affect his status as ID, which affects his status as ID, which affects. ठीक है. फिर next point. Independent director, independent director shall not be entitled, independent director shall not be entitled to ESOP. Independent director shall not be entitled to ESOP. However, he may receive remuneration. He may receive remuneration by way of sitting fee, reimbursement, वो 3 एरो बनाना है, reimbursement of board meeting expenses, profit related commission approved by members. 3 एरो. Sitting fee, reimbursement of board meeting expenses, profit related commission approved by members. Profit related commission approved by members. फिर ये लाइन अमेंडमेंट है, इस बार के एग्जाम में भी था, कॉपी कर लीजिए एज इट इज. ब्रैकेट टू ब्रैकेट नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा. ब्रैकेट टू ब्रैकेट नेक्स्ट पॉइंट, कॉपी. And let me know once done.
हो गया? देखो अभी नीचे, देखो, ID shall be appointed, ID shall be appointed for a term up to 5 years, for a term up to 5 years. फिर उसी के नीचे डोंट चेंज द पॉइंट, ही इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, he is eligible for reappointment, he is eligible for reappointment for another term up to 5 years, for another term up to 5 years by SR, by SR. Wait. After two terms, after two terms, there has to be a cooling period of, after two terms, there has to be a cooling period of 3 years, 3 years, full stop. उसके नीचे, during the said 3 years, during the said 3 years, he shall not be, he shall not be associated, he shall not be associated slash appointed slash appointed in the company, in the company, in any other capacity, in any other capacity, either directly or indirectly, either directly or indirectly, either directly or indirectly. Last point, if ID is appointed, if ID is appointed in second term, that is by SR, and if he is removed in second term, it can be done only by SR. It can be done only by SR. If ID is appointed in second term, that is by SR, and if he is removed in the second term, it can be done only by SR. Only by SR. ठीक है, फिर नीचे लिख दीजिए, नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के पॉइंट बनाइए, 149.6 who can be ID, 149.6 who can be ID, who can be ID, who can be ID, refer page 1.36 module, refer page 1.36 module. आ जाइए लास्ट सेक्शन, फाइनली देन वी आर डन. देखो वहां पर 163, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय proportional representation, 22nd हुआ है,
appointment of directors by proportional representation. Last, पहला point. Such appointment, such appointment provisions, such appointments provision shall be, shall be mentioned in OVA, shall be mentioned in OVA. Okay. Number two, it overrides, it overrides, it overrides the provisions of Companies Act 2013. Overrides the provisions of Companies Act 2013. Third, minimum two-third, minimum two-third of total number of directors, minimum two-third of total number of directors shall be appointed, shall be appointed with the principles of proportional representation. Shall be appointed with the principle of proportional representation. Shall be appointed with the principle of proportional representation. Fifth, next, such appointment shall be made once in every 3 years. Such appointment shall be made once in every 3 years. Casual, next point, casual vacancies. Casual vacancies of such director, casual vacancy of such director shall be filled, shall be filled as per 161(4). Shall be filled as per 161(4). Next point. Such directors cannot be removed, cannot be removed by members in general meeting. Cannot be removed by members in general meeting. Fifth, last point. 163 is not applicable. 163 is not applicable to a wholly owned government company, to a wholly owned government company and its subsidiary, and its subsidiary. फिर benefit टिकड़ी 92 137 टिकड़ी डॉट डॉट खत्म. चैप्टर इज ओवर. फिनिश. समाप्त झाला थैली पति. मेरी तरफ से मई 22 नवंबर 22 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट के बैच का कॉम्प्रिहेंशन पूरा करा दिया एक्सेप्ट टू चैप्टर सेबी एंड फेमा वो मैं यूट्यूब पे बाकी पूरा करा उतना भी कर लिया. स्टिल यू बी एबल टू राइट 100 या 95 मार्क्स तो लिख ही सकते हो क्योंकि फेमा या आईबीसी का ऑप्शन में निकल सकते. पूरा चैप्टर करा. ऐप पे का हो गया पूरा सिलेबस. यहाँ पर मैंने नोट्स बनाया. सब कुछ हो गया. इतना पढ़ लो अच्छे से पास हो जाओ. रहा बात सेबी एंड फेमा का वो मैं अप्रैल में क्योंकि सुबह अपना चलेगा ऑडिट शाम को मैं लूंगा वो लॉ के 2 चैप्टर्स यूट्यूब पर. बाकी पूरा करा दिया उतना आप रिविजन कर लीजिए. नोट्स बनवा दिए आपको हाथ के उतना ढंग से कर लीजिए पक्का पास. एंड अप्रैल में अपना चलेगा सेबी एंड फेमा. मैंने अप्रैल मिड में अभी तो पहले फास्ट ट्रैक चलेगा ना ऑडिट का. मिड में इतना जल्दी रिविजन करके क्या मिलेगा.
मेरे को वो नोट्स दे देना, और सुमित तेरे को जो मैंने काम बोला वो लिस्ट बना के मुझे दे देना। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर। ऑल द पीपल हु आर वेटिंग एंड जॉइन वांट टू जॉइन फास्ट ट्रैक बैच ऑफ ऑडिट, 1 से 10 अप्रैल लाइव मैं मुंबई से लूंगा आपको। एंड यू हैव टू टेक द प्लान, यू हैव टू यूज द कोड अबीसीए, ABHICA। हाँ, डाउट सेशन आएगा, टेंशन मत ले। आएगा आएगा, वो सब सेशन में लेता रहूंगा बीच में। बाय, टेक, यूज द कोड अबीसी।